Okay, thank you. Okay, so starting today, quantum theory of free electron gas, which is also called Sommerfeld theory. So, put the heading quantum approach or Sommerfeld theory. वीडियो ब्लर आ रहा क्या? नहीं सर, अभी सही हो गया. Okay, so this is your Sommerfeld theory. Okay, or this is a quantum approach. So this is the same kind what we have done for लैटिस वाइब्रेशन. उसी तरह का इसमें भी डेंसिटी स्टेट कैलकुलेट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के लिए. तो डिफरेंस क्या है इसमें क्लासिकल मॉडल में और क्वांटम मॉडल में? तो क्योंकि क्वांटम मॉडल है, सो नाउ यू हैव इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो नाउ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओके, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कम इन पिक्चर. ओके, पॉली प्रिंसिपल come in picture. What is Pauli's principle? One electron, one state. Okay, one electron. So one energy level, two electrons. Right? One spin up, one spin down. Yes sir, yes sir. So at each state, okay, we have two, or we say at each energy level we have two states. Okay, so this is Pauli's principle. Okay, now since you are using this quantum mechanics, okay, so now you'll use this Schrodinger equation instead of your Newton's equation. So now you use Schrodinger equation. Okay, number third. Okay, now since they are fermions, okay, so you have to use what? Fermi-Dirac statics. Fermi-Dirac statics, okay, instead of FD statical mechanics, instead of your MB statics. Okay, और क्या आ जाएगा इसके साथ में? Now here also we'll assume that your electrons are free, because free, तभी इसको free बोल रहे हैं ना, free electron gas है. तो still the assumption what we have made in classical theory that electrons are independent to each other. Okay, so still they are free. So electrons are independent to each other. Okay, so what your Sommerfeld theory says, okay, that consider a box, okay, a box of equal length sides, say this is L, L, L. Okay, so volume is what? Volume, your Lx is equal to L. Okay, Ly equals to L, Lz equals to L. Okay, and your volume will be simply L cube. Okay, so I'm considering this box. Okay, now now my electrons are in this box. Okay, so if I want to write, I want to find the state of the electron, what should I do? If my electrons are in this box, okay, and sir, single electron in this box, or no, electron gas is there. Okay, whole electron gas in this box. Yeah. So what I'm saying, if I want to know the quantum state of an electron, okay, so quantum state of electron, okay, it can be given by Schrodinger equations. Okay, Schrodinger's equation. What is Schrodinger equation? Minus h cross h cut square 2m del 2 psi, okay, plus del 2 del y square, okay, plus del 2 del z square psi, okay, और क्या आएगा? Equals to E psi. This is your Schrodinger equations. Okay, or if you want to write, you can write in terms of del also. H cross square 2m, okay, del square psi equals to E psi. Now this is your Schrodinger equations. Okay, now say this is your x direction, say this is your y direction, say this is your z direction. Okay, now if we apply with the
solution of this Schrodinger equations, okay, they are plane waves. So if I want to write the solution of this equation, what I can write, psi r equal to 1 upon v e power iota kr. Can I write the solution of this electron of particle in the box? ऐसा लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Okay, if you put a, then if you put instead of a, you put a should be normalized. Okay, and when you put normalizing condition, a will come out as a b. Okay, so this is your सर हाँ सर ये रूट 2/a होगा ना सर? क्या होगा? हाँ सर 2/a होता है. रूट 2 बाई ए होता है 2/a ना? होता है. हाँ, Yes sir. यस वो सर. तो एक डायमेंशन में है. अगर तो 2/a की पावर 3/2 हो जाएगा. हम्म, 2/a की पावर 3/2. अगर तुम्हारा सर ऊपर √8 भी आएगा ना. 3 डायमेंशनल बॉक्स है. अच्छा, Yes, sir. चलो तुम मुझे बताओ, ये इसका ये है, ठीक है, ए लिख देता हूँ मैं, यस सर. ठीक है. यस सर. नाउ इट शुड बी नॉर्मलाइज. तो नॉर्मलाइज यस लगाओ. सर. कहाँ से? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, साई स्टार साई डी टॉ शुड बी 1. ओके, तो क्या आएगा? इफ यू पुट हियर, इसको रब कर रहा हूँ मैं ना. Yes sir. So if I put this one, what will come? Psi star psi a square, okay, v equals to 1 नहीं आएगा. If I put this values here, minus infinite to infinite, psi star क्या? ये psi star हो जाएगा e power minus iota kr, okay, a star, and then you have a e power iota kr, okay, d tau equals to 1. तो ये क्या? ये दोनों हो गया a star a mod स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये तो 1 हो गया. ओके, आपको अच्छा, आपके पास ये बच्चा, ठीक है. यहाँ पे ये क्या है? वॉल्यूम ही तो हमारे पास में a स्क्वायर वॉल्यूम 1, ओके, एंड योर a विल बी व्हाट? रूट v. सर वो वॉल्यूम था, मुझे लगा वेलोसिटी कहाँ से आ रही है. वेलोसिटी का वॉल्यूम तो आएगा, डी टॉ लिखो या v लिखो, जो भी लिखो. अच्छा ओके सर. हमारे पास Yes स्पेस sir. है खाली. ओके सर. Okay, I was so saying that few velocity. so solution of this equation can be given by this equation. Okay, now if I want to write energy, okay, energy का expression क्या होगा? या जो आप जो बोल रहे हो ना, solution साइन के फॉर्म में, okay, so we can write in sine form also, you can write also in e power iota k power also. Okay, so I'm not writing Yes, here sir. in the form of sine. The reason is sine के जो solution आते हैं, that come that those are standing waves. Okay, Yes sir. here I'm taking this periodic boundary conditions. Okay, अगर मैं इसको फिक्स बाउंड्री कंडीशन लेके सॉल्व करूंगा, तो जो आपका आता है कि रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई ए 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में एल इज 4 बाई एल स्क्वायर 8 बाई √8 बाई एल क्यूब इन 3 डायमेंशन. Those solutions are standing waves. Okay, so I am taking Yes, a plane wave. Okay, I'm taking plane wave. That means I have to apply now periodic boundary conditions. Okay, so what are the periodic boundary conditions? So periodic boundary condition का मतलब है, okay, so periodic boundary condition use periodic boundary conditions. Okay, so what periodic boundary condition says that x, okay, at x plus l y z is equal to what? Psi x y z. Similarly, psi x y plus l z, okay, it is equal to psi x y z. Similarly, psi x y z plus l is equal to psi x y z. Okay, these are your periodic boundary conditions. ओके, पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है कि सपोज ये 1 डायमेंशनल केस है, तो 1 डायमेंशनल केस ये रहा. ओके, 1 डायमेंशनल बॉक्स है, तो यहाँ पे भी आपका साइज 0 है, यहाँ पे भी आपका साइज 0 है, क्योंकि v इनफाइनाइट है. ओके, v इस पार्टिकुलर बॉक्स के लिए v की प्रोफाइल क्या है? पोटेंशियल की प्रोफाइल क्या है? v इक्वल्स टू व्हाट? v इक्वल्स टू vr इक्वल्स टू 0. 0 कहाँ पर है? इनसाइड r. ओके, inside the box. Okay, inside the box. R inside the box. Okay, when r is inside the box, particle is free, potential is 0, and when it is outside, then it is infinite. Okay, r outside
द बॉक्स। ओके, सो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू l पे साइज सेम है, but I am taking periodic boundary condition because I am taking plane wave type of solution। इसका मतलब है कि I am folding this rod। ओके, जैसे हमने लैटिस वाइब्रेशन में किया था, सर्कल बनाया था। ओके, so these 2 points are connected, folded। okay, so that's why I'm applying periodic boundary conditions, and you know, when we apply periodic boundary condition, okay, then if you use this boundary condition, so we know k values are restricted, and k values are given as k, okay, equals to kx, ky, kz equals to, what is the value, nx 2 pi upon l, okay, ny 2 pi upon l, and nz 2 pi, nz 2 pi upon l। okay, so k values are restricted, Sir. हाँ सर ये फोल्डेड कैसे एज्यूम कर सकते हैं, मतलब x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू l एक ही है। तो पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन में मैंने जब लैटिस वाइब्रेशन बताया तब क्या बताया था, क्या क्रिस्टल बहुत बड़ा है, ठीक है, यस सर। तो वो उसके एंड फिक्स नहीं है, तो उसके अंदर से कोई छोटा सा पार्ट लेके you can assume plain wave type solution। मतलब आपके पॉइंट्स ऐसे होंगे ना जहाँ पे कहीं ना कहीं तो ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे फेज सेम होंगी। यस सर, यस सर। तो वही कंसेप्ट है, फेज सेम, किसी दो पॉइंट्स पे फेज सेम है। ओके सर। okay, so now we already seen the k when you are restricting electron in a box। okay, so your k cannot be continuous, it have a continuous this values। okay, where nx is what, nx is 0 plus minus 1 plus minus 2, okay, so on। similarly your ny is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3, so on। similarly I can write nz, okay, plus minus 1 plus minus 3, okay, so on। so let me visualize this thing in k space। okay, so if I try to, because each k is a state, okay, each k value is a state, so सर हाँ सर जीरो कैसे होगा सर, जीरो यहाँ पे जीरो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम डेंसिटी स्टेट निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे जीरो लेने से कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं, एनर्जी से कोई यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो इफ यू से हियर x y z, okay, so this is a k space, so k values are not continuous, discrete। okay, so suppose these are case value already we have discussed। okay, these are k values। okay, this is k space sphere, a k vector। if I say energy, okay, energy is what, h cut square k square by 2m। okay, so this is my k space, so this is my k space, okay, and this is what, this is energy surface, क्योंकि सबके लिए k सेम है, k is fixed, that means क्या energy constant है, so this is the one kind of energy surface। okay, and from periodic boundary condition I know the gap between 2 points is what, 2 pi by l, this gap is what, 2 points, 2 pi by l। similarly in y direction also the gap is what, 2 pi by l। similarly in z direction the gap is 2 pi by l। okay, that means the volume of one k state, okay, the volume of k state, okay, the volume the volume of one state in k space is the volume of unit cell, okay, in k space is simply, okay, what, 2 pi by l cube, 2 pi by l 2 pi by l 2 pi by l 2 pi by l 2 pi by l। okay, क्योंकि nx का वैल्यू क्या है, n is vary by 1 and by vary by 1 and z by vary by 1 only। okay, so this is the volume of unit cell in k space। okay, similarly if I want to write number of cells, okay, number of cells or number of states
in K space. So in 3D, I can write number of K states. N equals to what? N equals to, this is a sphere. The sphere का volume है 4/3 pi k cube. Okay, and divide by unit cell 2 pi by L cube. Okay, now since एक state पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, one energy level, we can have 2 electrons, so I'm multiplying this by 2. Okay, so these are the total number of states. Okay, for electron. Now solid, इसको solve कर लो. So this will give you what? Okay, 8. So 8/3. Okay, 8/3, and you have pi k cube. Okay, this become 8 pi cube. Okay, L cube ऊपर आ जाएगा. Now the difference what we have done in lattice and here difference is, here energy is quality function of K. So I can write the number of states, K states is equals to 8 states चला गया. ठीक है. So I got 1 square, so चला गया. So I got K cube. Okay, थोड़ा सही कराना. Okay, V K cube 3 pi square. ये आ रहा है. क्या रहा है? ठीक है ना सर? एक मिनट, मैं भी ठीक है सर. हाँ ठीक है, 3 pi square. हाँ, now सर ये 2 times क्यों किया? एक बता दो, एक एनर्जी पे 2 स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन की. Oh yes sir. Spin up and spin down. Okay, now we know the relation between energy and K is h cut square. K square पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है 2m. ओके, तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी? K वैल्यू विल कम अंडर रूट 2me अपॉन h cut square. Okay, now if you use this one value here n, so your n as a function, n is a function of K. Now n is a function of energy. क्या आ जाएगा? V upon 3 pi square. Okay, 3 pi square and K cube, that will be 2me h cut square की power 3/2. Okay, now if I want density of state, dn up by de. Okay, that will be simply what? V upon 2 pi square 2m e h cut square. सर 3 pi square ना सर? तो यहाँ कट जाएगा, 3/2 आगे जाएगा डिफरेंशिएट करने पे. ओह सॉरी हाँ ठीक है सर, ठीक है. 3/2 half. Okay, so if I want to write density of state, okay, so if I want to write density of state Ge de, okay, in 3D, so I can simply write this is equal to V upon 2 pi square 2me upon h cut square power half. Okay, that means density of state Ge is proportional to 2m by e power सर ये 3 half कैसा कटा सर? in 3D. Okay, in 3D, सर 2 my energy, if I Hello. plot a graph between density of state Hello. Ge and E, okay, Ge density of state, that should come. Okay, Ge, Hello. okay, in 3D is proportional to what? E power half. Okay, so this is my density of state expression for electron, free electron. Okay, in 3 dimension. Now when electrons are filled in metal or solid, okay, so इसको रब कर दूं क्या? Clear up this one? सर 2m by h का स्क्वायर तो 3/2 होगा ना? हाँ? 2m by h का स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा, सिर्फ e का पावर हाफ होगा सर. क्योंकि ये 3/2 आगे जाएगा तो ये हाफ नहीं हो जाएगा पूरा. अच्छा 2/m सही, करेक्ट 2/m 3/2 ये हाफ हो जाएगा. अब ठीक है? यस सर, अब ठीक है. यस सर. ओके सर हाँ, सर ये डिनोमिनेटर में 2 pi square कैसा आया? कौन सा वाला? ये dn by de. अरे डिफरेंशिएट किया e पावर 3/2 को, तो 3/2 आगे नहीं आएगा क्या?
ओके सर। ठीक है। सो now put the heading Fermi energy. Okay, Fermi energy क्या होता है? Fermi energy at T is equal to 0 Kelvin. Okay, so the topmost field level होता है किसी भी मेटल के अंदर, ओके, और सॉलिड के अंदर टॉपमोस्ट फील्ड लेवल जो होता है एट T is equal to 0 Kelvin, उसको हम फर्मी सरफेस बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अभी हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया था। ओके, सो दिस इज माय kx ky kz। ओके, और मैंने बोला था ये अप टू दिस इज अप टू k। ओके, सो एट T is equal to 0 जो टॉप मोस्ट सरफेस होता है, ओके, सबसे जिसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड योर फर्मी सरफेस। ओके, फर्मी सरफेस इन 3 डायमेंशन इट इज सर्कल, सॉरी स्फीयर। ओके, सो फर्मी स्फीयर, और जो ये जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड योर फर्मी एनर्जी। ओके, सो करस्पॉन्डिंग इस सरफेस के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड योर फर्मी एनर्जी। ओके, सरफेस को इस फर्मी सरफेस कहा गया है। हाँ, तो फर्मी सरफेस ही बोलेंगे ना इसको, टॉप मोस्ट हाईएस्ट एनर्जी का सरफेस है ना T = 0 केल्विन पे। ओके सर। Okay, now since electrons are fermion, okay, so they should also obey Fermi-Dirac statics. Okay, so if I write the expression for Fermi-Dirac statics, so if I write Fermi-Dirac, okay, Fermi-Dirac function, what is Fe distribution function, Fd Fermi-Dirac distribution function, okay, that is what equal to 1/1 plus exponential E minus EF upon KT, ये होता है function। Okay, now suppose if I want to plot this for with respect to temperature or energy, I want to draw this curve, okay, Fe as a function of energy. Okay, so at T is equal to 0, so T is equal to 0, so this term become infinite। okay, अगर ये इसको T को 0 कर देंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। एंड फर्मी एनर्जी टॉप मोस्ट लेवल है, तो उसकी जो उसके नीचे की कोई भी एनर्जी होगी तो ये टर्म ऊपर क्या नेगेटिव आएगी। ओके, सो आई कैन राइट फॉर T is equal to 0 for T is equal to 0 Kelvin, all energies E are less than EF। okay, so इस एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंशियल E minus EF by KT is equal to E power minus infinite equals to 0। okay, that means at T is equal to 0, Kelvin, your Fe is equal to 1। okay, Fe equal to 1 matlab probability of occupying the state is 1। okay, that means all the states below Fermi level, they are filled, they're occupied, that's why the Fe value is the probability value is 1। okay, so I can draw the graph for T is equal to 0। okay, EF, all the state which lie below EF, जिनकी भी एनर्जी फर्मी एनर्जी से कम है, उन सबके लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू 1 है। ओके, दिस ग्राफ इज इक्वल टू at T is equal to 0 Kelvin। okay, and if temperature increases, okay, then the shape of this graph is like this। okay, when T is greater than 0 Kelvin। okay, so at the moment I am only discussing T is equal to 0 Kelvin। okay, once we finish what happens when T is equal to 0 Kelvin, we understand, then we'll go further what happens when T is not equal to 0। okay, so now T is equal to 0 Kelvin, this function is 1, all the states are occupied below your Fermi level। that means if I draw energy structure, sir, this is valid for only T is equals to 0 ना। हाँ, T is equal to 0 पे तो Fe1 आएगा ना, कि तब मतलब सब इलेक्ट्रॉन्स सारे स्टेट्स जो E के नीचे है सारे के सारे ऑक्यूपाइड है, ऑक्युपाइड हैं। ओके ओके, तो सपोज अब ये मेरा एनर्जी स्ट्रक्चर है। ओके, सो दिस इज माय एनर्जी लेवल्स।
okay, and topmost level is EF, okay. तो अगर मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको फिल करना है, तो मुझे कितने लेवल चाहिए? n/2 n/2 चाहिए। हर लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये टॉप मोस्ट लेवल है, ये सारे के सारे फील्ड है, ये सारे फील्ड है, ओके। अगर मुझे n इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, सो आई नीड हाउ मच? n/2 लेवल्स, ओके। एंड लेवल्स हाउ कैन आई कैलकुलेट? यूजिंग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, okay. yes sir If I know the density of state, I can integrate the density of state function for 3D, and I can get how many states are there, and per state there are 2 electrons. You multiply by 2, you'll get n. That will be your total number of electrons, okay. So for example, now I want Sir. to हाँ सर ये एक बार रिपीट कर देते, ये n/2 कैसा आया? कौन सा वाला? ये अच्छा, टोटल नंबर n। हाँ, ओके। सो यहाँ पर क्या है, ये फर्मी लेवल है, मुझे इसमें हाईएस्ट। l इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। यस सर। n एक लेवल पर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो n Yes, इलेक्ट्रॉन sir. फिल करने के लिए कितने लेवल चाहिए? n/2 नहीं चाहिए मेरे को यस levels. सर, यस सर। Okay, so now by knowing these things, okay, we can calculate now the expression for Fermi energy, okay. So Fermi energy कैसे calculate कर सकते हैं? Okay, so you know the n, okay, n just now we have calculated just now, okay. What was my n? My n was 4/3 pi k cube, okay, upon 2 pi by l, okay. और मैंने इसको एनर्जी के टर्म में लिख दिया था ना, एनर्जी के टर्म में लिख दिया था हम लोगों ने। सो लेट मी, ओके, इसको वापस लिख दो, चलो ठीक है। 2 pi by l क्यूब, सो दिस इज द नंबर, ओके, दिस इज टोटल नंबर स्टेट, और एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो यहाँ पे लिखो n/2 इक्वल टू टोटल नंबर स्टेट। टोटल नंबर स्टेट कितनी है? n/2, 1 2 3 4 n/2, ओके। सो n/2 इक्वल्स टू व्हाट? टोटल नंबर ऑफ स्टेट, और you can write number of electron is equal to 2 into state, okay. Now we know this n is equal to what? N is equal to I'm not solving this one directly, I'm writing this is become 1/3 pi square, okay, k fq. Now because this is a Fermi level, so this k vector be your Fermi vector k cube v, okay. चेक करो ये सही है कि नहीं है, ये एक्सप्रेशन सही है कि नहीं है? सही है सर। सही है ना? So now you can calculate what is your Fermi level, k, that will be equal to 3 pi square n upon v, okay. So in 3D your Fermi level, Fermi vector k is equal to what? K is equal to 3 pi square n by v की power 1/3, okay. And this also you can write as 3 pi square. This is the concentration, okay, number of electron per Yes, unit sir. volume. You can write 1/3. That means your Fermi vector kf, okay, your Fermi vector kf is proportional to what? n power 1/3. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं। Fermi in 3D, your Fermi vector kf is proportional to n by n power 1/3, where n is your concentration of electron, okay. Now my aim is to calculate what? Fermi energy, okay. So n is हाँ, concentration of electron at Fermi level. क्या? No, small n is concentration of electron. वो मेटल में पूरे सारे इलेक्ट्रॉन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन को फिल किया ना अपने फर्मी लेवल तक। जितने भी इलेक्ट्रॉन थे पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, डेंसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की आपके सिस्टम में, ओके। दैट इज n पावर 1/3, ओके। नाउ आई वांट फर्मी एनर्जी, क्योंकि फर्मी एनर्जी में क्या रिलेशन है? स्फीयर है, ओके। फर्मी एनर्जी व्हाट? h का स्क्वायर k square by 12 2m, okay. K square is what? K square is your kx square plus ky square plus kz square, okay. तभी तो एनर्जी का जो स्फीयर बना वो, ठीक है, स्फीयर इक्वेशन ना, तो क्या Yes. h का स्क्वायर k स्क्वायर बाय 2m, ओके। so this is your Fermi, kf, you want kf, so now I can write ef equal to what? h का square 2m, okay, and this become your 3 pi square n power 2/3, okay. So this is your expression for Fermi energy in 3D, okay. Expression for Fermi energy 3D, that is in 3D the Fermi energy is proportional to n power 2/3.
Okay, so this is your 3D case. Now फर्मी वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, फर्मी एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, हमने डेंसिटी स्टेट देख लिया, देन फर्मी वेक्टर, फर्मी एनर्जी. नाउ एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन. ओके, वी नीड टू कैलकुलेट. So now put the heading average energy for 3-dimensional free electron gas. So average energy. Okay, average energy मतलब per electron. So that will be total energy. Total energy कितनी होती है? E. Okay, कितनी स्टेट है, कितनी स्टेट्स हैं, उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 उतने इलेक्ट्रॉन होंगे. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेट्स. ओके, सो जी डी दैट मींस उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय एफई प्रोबेबिलिटी up to what, up to 0 to maximum level is Fermi level, divided by n. Okay, now at t is equal to 0. हाँ, एक बार फिर से ये बताना, ये what you have written E ये average. GED क्या है? GED है total number of states. Yes sir. Total number of states. Okay, of course by after multiplying 2, total number of electron states. Total, you can say GED total number of electron. Okay. Yes sir. Yes sir. पर स्टेट है, पर उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो फिल्ड है. FED. Yes FE. FE प्रोबेबिलिटी है. Yes sir. तो FE से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हैं. अब ये स्टेट Yes है, sir. और स्टेट को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने Yes, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एनर्जी से मल्टीप्लाई करोगे टोटल एनर्जी आ जाएगा. एक जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हर ई पर, हर ई पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी ई है. सबको सम करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगा, और उसको अपॉन n करोगे तो एवरेज आ जाएगा. ओके, सो एट t is equal to 0 Kelvin you have fe is equal to 1. Okay, so simply you can write now. सर 2 बार टी. ओके, 0 to EF. ओके, ये तो वन हो जाएगा ना. GED की वैल्यू पुट कर दो. सो GED की वैल्यू जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड, कितना था GED का वैल्यू कितना था? V upon 2 pi square हाँ, into. okay, so V upon 2 pi square, so E, okay, into V upon 2 pi square. Okay, 2m power 2m. Okay, h cut square 3 by 2. Okay, e power half d. ठीक है, can I write like this? यस सर. Okay, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, so you'll get the average energy. So if you integrate this one, okay, so my E will be 1 by n. Okay, 1 by n, and then you have V, then you have 2 pi square, you know, 2 pi square, yes, 2 pi square. Okay, 2m h cut square 3 by 2. Okay, e power half and e. Okay, 0 to EF e power 3 by 2 d. So average energy will be 1 upon n v upon 2 pi square 2m h cut square 3 by 2 EF power 3 by 2. Okay, इसको लिखो e power half into e power EF. Okay, now put the value of Fermi energy in 3-dimensional, and v upon 2 pi square 2m h cut square 3 by 2. Now I know what is value is h cut square upon 2m, that is equal to 3 pi square n. Okay, power था कितना था पावर? सर वो 5/2 हो जाएगा ना सर. ये 5/2, सॉरी 5/2 आ गया, तो यहाँ पे 3/2 ना, 3/2 and 1 5/2. Okay, and 2/5 भी आएगा इधर, 2/5 also will come, 2/5. So 2/5 also आएगा. So ये हो गया आपका 3/2. ये 1/3 था, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? ये आ गया वापस. करेक्ट? नहीं,
ये क्या था, ये पावर था 1/3. ओके, दिस वाज 1/3. सर सेकेंड इक्वेशन में e टू पावर 5/2. अच्छा, ओके सर. 5/2, 2/5. Okay, so this is 1/3. Now you multiply by 3/2. Okay, so ये 3/2 हो गया. 2m पर h का स्क्वायर पर 2m की पावर 3/2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. So what you can write simply, okay, now you can write average energy is equal to 2/5 1/n. Okay, v upon 2 pi square into 3 pi square n by v. Okay, v cancel, n cancel. Okay, pi square cancel, okay, and और क्या cancel होगा, 2 cancel, and EF is remaining here. So average energy is what, 3/5 EF. So this is in 3-dimensional gas. Your average energy is 3/5 EF. Okay. So अभी हमने क्या किया, we have calculated this for 3D case. Okay, now similarly you can calculate for 2D case and 1D case. Okay, ये जितने भी quantities मैंने निकाली है, density state निकालनी है, then Fermi vector, Fermi energy, and then average energy. You can calculate these things for. सर आपका राइट साइड वाले जो इक्वेशंस लास्ट जो है ना, वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसका कैलकुलेशंस कैसे करते हैं आपने? b 2m by h का 3/2 है. ओके, और ये उसको उल्टा है, h का स्क्वायर बाय 2m पावर 3/2. तो ये इसको कैंसिल कर देगा ना इसको. बी h कट की पावर क्या है यहाँ पे, 3/2. h कट स्क्वायर यहाँ पे h कट स्क्वायर की पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगा. 2m की पावर 3/2, 2m की पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगा. और एक EF और एक है ना हाँ, एक्स्ट्रा. ये EF और एक ना, EF तो लिखो तुम यहाँ पे. अच्छा, तो EF तो है ही हो. ठीक है, तो बाकी से कैंसिल हो गया. यू गॉट योर दिस वन. ओके, दिस इज योर एवरेज एनर्जी. नाउ फॉर सेम थिंग, अंडर रूट पाई स्क्वायर एन भी तो बच रहा है. कहाँ बच रहा है, पाई इसका तो कट गया ना. इस स्मॉल एन को मैंने लिख दिया ना, n by v कर दिया. ये 3 पाई में यहाँ से आया ना. पाई स्क्वायर एन के ऊपर 1/√2 बचेगा ना, 1/3 और 3/√2. ये 1/3 था, 2/3 था ना. यहाँ पे चेक करो उसको, 2/3 है. एक्सप्रेशन में 2/3 होगा, 1/3 नहीं होगा. जब भी निकाला हमने फर्मी एनर्जी का, 2/3 होगा. ठीक है. सो अभी 2D के लिए निकालो, सेम 2D के लिए 1D के लिए निकालो. ओके, तो मैं इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं ना. Yes, sir. यस सर. यस सर. Now please calculate density of state for 2D. So ये हमने वैसे भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग. अब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करें, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. ओके, फॉर 2D. 2D में the k space will be your simply circle. Okay, kx ky. Okay, so number of states will be what, pi k square upon 2 pi upon l ka square into 2. Okay, so what become n 2 pi k square 4 pi square l square. Okay, 2 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया. सो दिस बिकम 1/2 पाई a. एल स्क्वायर कब लिख रहा हूँ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू a. ये 2 का मल्टीप्लाई क्यों करता है, मतलब वही फॉर बोथ द साइड. एक के स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है ना. ओ फर्मी वाला. ओके सर. ओके, सो a अपॉन 2 पाई. ओके, a अपॉन 2 पाई k स्क्वायर. ओके, now we know what is E equals to h cut square k square upon 2me. Okay, 2m. Okay, so then we can put the value of E here. So a will be 2 pi and k square will be 2me upon h cut square. Okay, so this 2 to cancel, so this become m upon h cut square. Okay, a into E. Okay,
the total number of states. Okay, okay, and this 2 pi by L. Similarly, this is also 2 pi by L. So now this I got number of state as a function of energy m a. आई थिंक डिनोमिनेटर में पाई आएगा सर. हाँ पाई आया बचा होगा ना, पाई तो आएगा. हाँ पाई. ओके पाई. Now density of state dn upon de. Okay, that will be what m a pi h cut square. Okay, and this is what ge into d. Okay, so g into d m a pi h cut square d. This is your density of states in two Sir. dimension. हाँ सर सेकंड लाइन पर एक पाई स्क्वायर होगा ना, थर्ड लाइन पर. किसमें 1 2 3 लाइन पे क्यों ये पाई सर तो आप नीचे ए लिखा तो ये तो एल स्क्वायर की जगह यहाँ पाई कट गया, पाई बच गया ना. ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर 2D डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. ओके, now write Fermi energy. So if you want to write Fermi energy, okay, so two dimensional, this will be your topmost will be this will be kf. Okay, sorry, Fermi energy. Okay, ये नीचे m e जो लिखा है इसमें n नहीं है. किसमें? ये लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड में मतलब मेरा लेफ्ट ना, मेरा लेफ्ट में. हाँ n का n नहीं आ रहा ना. लास्ट इक्वेशन जो लेफ्ट वाली साइड में, लेफ्ट साइड में लास्ट इक्वेशन ये वाली ना जो सर्कल में किया मैंने. नहीं सर नहीं, ये जहाँ पे हमने पहले नंबर ऑफ स्टेट्स निकाला है. हाँ ये वाला नंबर, ये वाला. हाँ सर, इसमें नीचे लास्ट में में E equals to h cut square k square. m a e पाई h कट स्क्वायर आएगा बस खाली, और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हट जाएगा बस, ये बच जाएगा बस. m a पाई h कट स्क्वायर e. क्या मिस्टेक दिख रहा है इसमें? सर हमने जो नीचे e लिखा है ये कैसे लिखा है? ये वाला e. यहाँ से लिखा ना k स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? ये ठीक है सर. मैं 2me अपॉन h कट स्क्वायर. ठीक है सर. नहीं मुझे लगा सर ये उसके बाद का स्टेप है, मैंने ये कैसे नहीं. ठीक है, so this is your density of state. Okay, now calculate Fermi energy. Okay, so we have already calculated n. Okay, so n तो हमने कैलकुलेट कर लिया है. We can directly calculate what we have done, but मैं Fermi वेक्टर पे निकालना चाहता हूँ, इसे दोबारा करवा रहा हूँ. So now number of k states are equal to a upon 2 pi kf square. Okay, Fermi energy in 2D. Okay, at it is equal to 0 Kelvin पर है. Okay, निकालो. पहले k निकालो. Okay, सर सर एक वो था सर डेंसिटी ऑफ स्टेट का मतलब होता है E प्लस डी में कितने नंबर ऑफ पर यूनिट एनर्जी इंटरवल में कितनी एनर्जी है. यस सर. पर यूनिट एनर्जी में कितनी स्टेट्स हैं. ओके, that is your density of state. Okay, now we have already expression for this k. Okay, so now from here I can get kf square equals to 2 pi n upon a. Okay, so and this will be equal to what, 2 pi n. Okay, because two dimensional, so area aega, so your n upon a is n. Okay, so I can write now what kf is proportional to kf is equal to 2 pi n. लिख देता हूँ दोबारा, and kf is proportional to n. वहाँ पे 1/3 था. ओके, and ये यहाँ पे क्या है, kf is proportional to n in 2D. n to the power 1/2 ना. 1/2 क्यों आएगा? 1/2 आएगा क्या? हाफ Yes. करेंगे कि अच्छा हाफ आएगा. ठीक है, हाफ. ओके, and by half. Okay, now if you want Fermi energy, so Fermi energy will be simply h cut square kf square by 2m. So h cut square 2m. Okay, and kf square is what, 2 pi n. Okay, 2 to cancel, so pi h cut square m
into n, this will be your Fermi energy and that is proportional to n. Okay, वो चेक करने दो मेरे को के फिर ठीक है, h का पाई h का स्क्वायर n अपॉन 2m, m 2 का कैंसिल हो गया m. ओके ठीक है, तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी इन 2D, ये भी याद रखना है आपको फॉर 2D. Yes, sir. Now calculate the average energy in 2D. So ये जो कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जो रिजल्ट्स निकाल रहे हैं ये बहुत सारे ऑलमोस्ट आ चुके हैं क्वेश्चंस में, कई क्वेश्चंस तो. ओके सो this is now your Fermi energy. Okay, now we have to calculate for average energy. Average energy. Okay, Fermi energy. Okay, average energy. Sorry, average energy per electron in 2D. Okay, so E is what? 1 by n 0 to EF. Okay, E FE. Okay, FE तो हमको लेना ही नहीं है. So G D. Okay, so now G value in 2D. Okay, just now we calculated what is value G, m upon pi h cut square into A. Okay, so you can do it 1 by n 0 to EF. Okay, सर FE इसमें 1 ही है, 1 ही होगा ना? 1 ही होगा. ओके, फर्मियंस के लिए. सो दिस m जीरो में कर रहा है इसलिए तो 1 h का स्क्वायर. क्या बोल रहे हो? t इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं ना? t दैट इज t इक्वल टू 0 केल्विन पे निकाल रहा है. ओके, जब हमको स्पेसिफिकेट निकालना होगा तब ये साइड टर्म हमको t पे चाहिए ना. अभी 0 केल्विन निकाल रहे हैं. जब हमको cv निकालना है स्पेसिफिकेट, देन यू नीड एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ओके, सो अभी तो हम 0 केल्विन पे निकाल रहे हैं. So next class we will calculate on some other temperature T. So now what is this? mh square E m upon pi square D. Okay, so this will be equal to what? सर इसमें FE से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? FE किया ना, 1 ही है ना वो तो. FE is 1. 0 to EF. Okay, so 1 by n m pi h cut square A. Okay, this is एक पर एक ही है ना, E D 0 to EF. Okay, so 1 upon n m A pi h cut square, this become EF square by 2. Okay, and you can write 1 upon n m A pi h cut square. Okay, and this will be your EF को एक तरफ लिख दो और एक EF इधर लिख दो, एक EF अलग से लिख दो और EF का वैल्यू पुट कर दो 2 डायमेंशन में. So if you put the value of EF, okay, 1 upon n m A pi h cut square. Okay, EF का वैल्यू कितना है? h cut square pi n. Okay, upon m, and 1 by 2 is also there. Okay, and 1 EF is also there. So pi कट गया, h cut square कट गया, m कट गया. Okay, and is small n is n by a, तो k square by 2n by EF. तो आएगा half EF आएगा, half EF. Yes sir. Yes sir, ये आ रहा है. Okay, so this is for 2D. Now 1D के लिए कैलकुलेट ऐसे कैसे? हाँ बोलिए सर. एक्चुअली वो ये को इसे ब्रेक करके लिखने का क्या मतलब? व्हाट द पर्पस टू राइट लाइक दिस? भी वो EF का ये सब कैंसिल हो जाता है ना कैलकुलेशन में. भी वो तो यहाँ पे दिखा आपको सर, यहाँ पे जो अगर कैलकुलेट करके दिख रहा है कि मतलब एवरेज है EF के प्रोपोर्शनल लग रहा है, लेकिन एक्चुअल तो EF स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा ना सर?
नहीं तो अगर तू हाँ, वो अगर ऐसा पूछेगा तो क्वेश्चन में तो वो ईएफ वो तो जो डिपेंड करता है एवरेज एनर्जी क्या है, फर्मी एनर्जी का आधा है। फर्मी एनर्जी के टर्म्स में हम लोग किसी सिस्टम का फर्मी एनर्जी को पता होता है ना, ठीक है। हाँ, तो इसलिए बता रहे हैं कि कंपैरिजन में एवरेज एनर्जी फर्मी एनर्जी के कंपैरिजन में कितना कितना वैल्यू है। और अब यहाँ पे आप प्रोपोर्शनल नहीं कर सकते हो ना, अभी ये तो वैल्यू रखेंगे, ये कट भी तो रहा है, ये सब क्वांटिटीज तो है यहाँ पर, तो अगर वो कट जा रहा है हाँ, उससे तो फिर जो फाइनल आंसर तो ये आ रहा है हमारे पास में, वैल्यू है एनर्जी तो, अच्छा, ठीक है। ये मतलब ये ईएफ का आधा होता है, ईएफ का 3/5 होता है, और ईएफ क्वेश्चंस में दे रखा होता है ये 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिस्टम का आपके मेटल का ये है, या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देन यू कैन कैलकुलेट एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल। ओके, सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर 2D। नाउ सेम करो 1D के लिए, करो सेम कैलकुलेशन यू डू फॉर 1D। अब 1D में कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं खाली आंसर लिख रहा हूँ। ओके, सो नाउ फॉर 1D, okay, so 1D density of states, okay, density of states, okay, in 1D. So density of state 1D G D, okay, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ अभी, आपको कैलकुलेट करना है 1D, so that will be equals to L upon pi 2m h cut square half e power minus half, okay, and your kf Fermi level will come pi by 2n, okay, that is kf is proportional to n, and your Fermi energy will come out in 2D h cut square pi square n square, okay, upon 8m, okay, and your average energy will come out as 1 upon 3 EF, okay. So ये आपके रिजल्ट्स हैं, ओके। नाउ एक्चुअली आपको क्या करना है, एक एटलीस्ट एक टेबल बना लेनी है, ओके। सो जैसे आपको लिखना है डेंसिटी ऑफ स्टेट GD, ओके, देन योर के फर्मी वेक्टर, फर्मी एनर्जी, देन व्हाट नेक्स्ट एवरेज एनर्जी, ओके, टेबल, ओके, एंड देन इट इज फॉर 3D केस, 2D केस, 1D केस, ओके। तो GED 3D में e पावर हाफ प्रोपोर्शनल टू e पावर हाफ, ओके, प्रोपोर्शनल टू e पावर हाफ, 2D e पावर 0, 1D e पावर माइनस हाफ, ओके, KF प्रोपोर्शनल टू व्हाट n पावर 1/3, ओके। हियर यहाँ क्या कितना प्रोपोर्शनल था, n पावर हाफ, प्रोपोर्शनल टू n पावर हाफ, चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है, n पावर हाफ, एंड ओके, एंड 1D में क्या था, just now written 1D में क्या n is equal to n, okay, let us check. So for me n 2 डायमेंशन में क्या था इसका, 2 डायमेंशन में, okay, let me check, 2 डायमेंशन में your kf was n power half, ठीक है, and here is kf is your n, okay, and Fermi energy in 3D, okay. Similarly you can write Fermi energy in 1D is n square, okay, and in 2D Fermi energy was proportional to n, okay, and 3D में क्या था, n power 2 power 3, n power 2 power 3, okay, average energy 3/5 EF, okay, and here what is there, here it was half EF in 2D and is half 3 EF, okay, बस चेक कर लेना और ये रिजल्ट्स भी याद रख लेना, ओके। सो टुमारो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, विल कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट,
स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, जो हमने पहले क्लासिकली कैलकुलेट करी थी और जो रॉन्ग थी, ओके, वी हैव कैलकुलेटेड स्पेसिफिक और लैटिस वाइब्रेशन हमने कैलकुलेट कर लिया था. अब नाउ वी विल कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, टुमारो. ओके, सो आई एम स्टॉपिंग हियर. एनी क्वेश्चन? ये आंसर बता दो किसका आया कि नहीं आया. आगे सर. आ गया ना? यस सर. ओके, वही आपका जो करना है, आपका डेंसिटी कैसे आएगा. डेंसिटी के लिए आपको ये वॉल्यूम लाइन है आपकी, के स्पेस में लाइन है आपकी, ओके, प्लस माइनस भी है, प्लस भी 2 पाई बाई एल, 4 पाई बाई एल, ओके, ये के क्या है, -2 पाई बाई एल, -4 पाई बाई एल, ओके. सो यू वांट स्टेट्स, स्टेट क्या होगा, टोटल 2k, ओके, 2k अपॉन 2 पाई बाई एल एंड मल्टीप्लाई बाई 2, बस इतना तो करना है. एंड देन यू राइट एनर्जी का फंक्शन लगना है यहाँ पे के टर्म्स में, एंड यू टू डिफरेंशिएट, so you'll get this one, e power minus half. So we are seeing density of state GE, okay, it is proportional to e power half in 3D case, in 3D, okay. In 2D it is constant, 2D it is constant, okay. And if 1D, your GE of function of V is decreases e power minus half, proportional to e power minus half, okay. तो अभी हमने 3D निकाल लिया, 2D निकाल लिया, 1D निकाल लिया. 0D में क्या होगा, क्वांटम डॉट्स में क्या होगा? सर 1/E. क्वांटम डॉट्स में योर डेंसिटी ऑफ स्टेट, ओके, योर डेंसिटी ऑफ स्टेट GE, ओके, इज बेसिकली फंक्शन ऑफ, इज अ डेल्टा फंक्शन, ओके. ई माइनस EC जो भी लिखना है, ई फादर तो ई लिख लो, EC तो सेमीकंडक्टर में लिखेंगे, ओके. सो दिस इज अ डेल्टा फंक्शन, ओके. सो इफ आई प्लॉट माय डेंसिटी ऑफ स्टेट GE, ओके, एज अ फंक्शन ऑफ E, दैट विल बी शार्प लाइंस. शार्प लाइंस का मतलब क्या होता है, 0D हो गया तो क्या हो गया, 0D हो गया तो इसका मतलब एक तरह से आपका एटम ही हो गया. और एटम में क्या होता है, एक लेवल पे एक ही एनर्जी होती है ना, मतलब दो तो इलेक्ट्रॉन मिला के, ठीक है, बट दे आर शार्प, डेंसिटी शार्प लाइंस, ओके. इट्स लाइक बिहेव एटम, ओके. तो बैंड नहीं है, बैंड नहीं होता उसके अंदर. तो वेरिएशन डेंसिटी का मतलब क्या है, ओके. तो हर लेवल पे यू हैव शार्प एनर्जी लेवल्स. सो we will tomorrow I'll discuss these things little bit more, and we will move forward over towards temperature, this specific heat as a function of temperature, okay. So I'm stopping here. तो ये G डिराक डेल्टा E हाँ, है. डिराक डेल्टा होता है 0D के लिए, 0D तो के लिए, 0D means क्वांटम डॉट्स के लिए, डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर 0D, 0 तो डायमेंशन. quantum dots means what sir? क्वांटम डॉट्स क्या है, मतलब जैसे ये आपका क्या है, ये आपका थ्री डायमेंशनल क्यूब है ना, एक क्यूब है. Yes sir. अगर मैं इसकी हाइट को नैनोमीटर में कर दूं तो ये Yes sir. ये एक प्लेन बन जाएगा, Yes sir. ये 2D बन जाएगा, ठीक है. Yes sir. फिर उसकी मैं ब्रेड्थ भी काट दूं तो एक लाइन बन Yes जाएगा, sir. ये 1D बन गया, ठीक है. Yes sir. 1D है. अब मैं अगर उसको तीनों डायमेंशन से Yes. तीनों डायमेंशन से Sir. छोटा कर दूं, तीनों डायमेंशन से, ओके, तो वो एक पॉइंट की तरह बन जाएगा, आइलैंड की तरह बन एक जाएगा, डॉट बन जाएगा. डॉट बन जाएगा, ठीक है. 3 डायमेंशनल. Yes sir. का मतलब है उसकी डायमेंशंस तीनों डायरेक्शन में 100 नैनोमीटर से कम है, ओके. एक्चुअली 100 नैनोमीटर रफली है. एक्चुअली हर मेटल की एक एक्साइटोन बोर रेडियस होता है. तो जब भी आप किसी भी डायमेंशन में उसकी जो साइज है उसकी एक्साइटोन बोर रेडियस के कंपेरेबल लेके आओगे तो वो क्या है, आपका क्वांटाइजेशन इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा, ओके. सो इन द Yes तो sir. क्वांटाइजेशन इफेक्ट का मतलब क्या है, आपके एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होना शुरू कर देंगे. क्वांटाइजेशन इफेक्ट मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रम टाइप, ओके. बैंड छोटे हो जाएंगे, बैंड गैप बढ़ जाएगा, स्पेक्ट्रम आपके डिस्क्रीट हो जाएंगे. तो उसको बोलते हैं मतलब क्वांटम प्रॉपर्टी शो ये सब करना है. नैनो मटेरियल्स के अंदर पढ़ते हैं, ओके. जब नैनो Okay. मटेरियल्स पढ़ोगे तुम लोग आगे जाके तो उसमें सब ये कराएंगे कि साइज रिडक्शन से मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है, ओके. वो सब आगे हमारे सिलेबस Okay, तो नहीं है, ओके. चलो ठीक है. Okay sir. हम्म.
थैंक यू सर। थैंक यू सर।